तो देखिए, भारत का कॉर्पोरेट जगत एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ये कोई मामूली नियम कानून का फेरबदल नहीं है। ये तो एक तरह का पूरा ढांचागत बदलाव है। हम बात कर रहे हैं उन नए श्रम कोड्स की जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं और यकीन मानिए ये भारत में कामकाज के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। जरा सोचिए, दशकों से भारत का लेबर लॉ मतलब श्रम कानून 29 अलग अलग केंद्रीय कानूनों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। इसका पालन करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जहां हर कानून की अपनी अलग परिभाषाएं और अपने अलग नियम थे। लेकिन अब उस सारी जटिलता को खत्म कर दिया गया है। उन 29 कानूनों को सिर्फ 4, जी हाँ सिर्फ 4 सुव्यवस्थित और डिजिटल रूप से जुड़े हुए कोड्स में बदल दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है जिसका मकसद नियमों को आसान और सबके लिए एक जैसा बनाना है। तो आज हम इसी बदलाव की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि ये नए कोड्स आखिर हैं क्या, वो कौन सा 50% का नियम है जो सब कुछ बदलने वाला है, इसका कंपनियों के फाइनेंस पर कैसा असर पड़ेगा, इसमें कौन कौन से बड़े जोखिम छिपे हैं और सबसे जरूरी, संगठनों को अब आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव का जो मूल मकसद है वो एक बिखरे हुए सिस्टम को एक ऐसे ढांचे से बदलना है जो एकीकृत हो, जिसमें सब कुछ साफ साफ हो। लक्ष्य ये है कि अब कागजी कार्रवाई और हाथ से होने वाली निगरानी की जगह एक ऑटोमेटेड डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम ले लें। तो ये है वो 4 नए कोड्स: कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, OSH यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इनमें से हर एक कोड अपने अंदर कई पुराने कानूनों को समेट लेता है, जिससे अब कंप्लायंस के लिए एक ही जगह देखना होगा। और अब बात करते हैं इस पूरे बदलाव की सबसे अहम कड़ी की, वेतन की। एक नई और सबके लिए एक समान परिभाषा। ये वो एक बदलाव है जो हर दूसरी कानूनी गणना पर असर डालेगा और कंपनियों को अपनी सैलरी बनाने के तरीके को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर देगा। तो इस नई परिभाषा के 3 हिस्से हैं जो मिलकर तय करते हैं कि कानूनी गणना के लिए असल में वेतन क्या माना जाएगा। ये उस चलन को खत्म कर देगा जिसमें कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर भत्तों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती थी। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप है शामिल मदे, जैसे कि बेसिक सैलरी। दूसरा स्टेप है अपवर्जित मदे, जैसे कि HRA और बोनस। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, 15% का नियम। अगर किसी के भत्ते उसकी कुल सैलरी का 50% से ज्यादा है तो जो भी अतिरिक्त हिस्सा है उसे वापस वेतन में जोड़ दिया जाएगा। और बस यही वो नियम है जो पूरा खेल बदल देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी की कुल सैलरी 1 लाख रुपए है। इसमें 30,000 रुपए बेसिक है और 70,000 रुपए भत्ते हैं। अब चूंकि भत्ते 50% की सीमा से 20,000 रुपए ज्यादा है तो ये 20,000 रुपए वापस बेसिक वेतन में जोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब नया कानूनी वेतन 30,000 रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए माना जाएगा। और अब ग्रेजुटी और PF जैसी सारी गणनाएं इसी बढ़ी हुई रकम पर होंगी। तो इस नई वेतन परिभाषा का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक हिसाब किताब का बदलाव नहीं है। ये किसी भी संगठन के अंदर एक के बाद एक वित्तीय प्रभावों की झड़ी लगा देता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। ये जो बात कही गई है ये स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये एक एक्चुअल सुनामी है, खासकर उन फायदों के लिए जो लंबे समय के बाद मिलते हैं। इसका सीधा असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर पड़ेगा। देखिए, ग्रेच्युटी पर इसका असर सबसे जबरदस्त होने वाला है। ग्रेच्युटी का हिसाब हमेशा आखिरी सैलरी पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहा है तो उसकी ग्रेच्युटी की देनदारी उसके पूरे सर्विस पीरियड के लिए बढ़ जाएगी, सिर्फ आने वाले समय के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ा और अचानक आया हुआ वित्तीय बोझ है। और बात सिर्फ ग्रेच्युटी पर ही नहीं रुकती, PF और ESIC का योगदान बढ़ेगा, लीव एनकैशमेंट की देनदारी बढ़ेगी और तो और अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी सिर्फ 1 साल के बाद ग्रेच्युटी देनी होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरी बढ़ी हुई लागत को तुरंत कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होगा। वित्तीय असर के अलावा 2 और बहुत बड़े जोखिम हैं जिन पर कंपनियों को ध्यान देना ही होगा। एक तो है बहुत सख्त टैक्स नियम और दूसरा है ठेकेदारों के लिए बढ़ी हुई जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बाद, जिसे चेकमेट सिद्धांत कहा जा रहा है, एक नया नियम लागू है। नियम यह है कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी का सोशल सिक्योरिटी योगदान जमा करने में जरा भी देरी करती है तो उसे उस रकम पर टैक्स छूट हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये नियम कितना ज्यादा सख्त है। कर्मचारी का योगदान जमा करने की आखिरी तारीख है महीने की 15 तारीख। अगर कोई कंपनी 16 तारीख को जमा करती है, सिर्फ 1 दिन की देरी, तो वो उस रकम पर टैक्स कटौती का दावा हमेशा के लिए खो देगी। कोई माफी नहीं, कोई रियायत नहीं।
और इतना ही नहीं, नए कोड के तहत जो मुख्य नियोक्ता है वो अब अपने ठेकेदारों या वेंडर्स के कर्मचारियों के लिए भी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। मतलब अगर कोई ठेकेदार पेमेंट में कोई गड़बड़ी करता है तो उसका कानूनी और वित्तीय बोझ सीधे मुख्य कंपनी पर आ जाएगा। तो इन सब बदलावों को देखते हुए सवाल उठता है कि संगठनों को अब करना क्या चाहिए। देखिए, ये तैयारी सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक टीम का काम है जिसमें फाइनेंस और लीगल डिपार्टमेंट भी बराबर के हिस्सेदार हैं। इसके लिए एक 3 चरणीय रोड मैप है। पहला, एक डायग्नोस्टिक ऑडिट करें ताकि वित्तीय असर को ठीक से समझा जा सके। दूसरा, लीगल और एक्चुअरियल टीमों के साथ मिलकर सैलरी स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा डिजाइन करें। और तीसरा, अपने पेरोल सिस्टम को अपग्रेड करें और पक्की प्रक्रियाएं बनाएं। ये सभी कदम 1 अप्रैल 2026 की डेडलाइन से पहले पूरे करने होंगे। तो अंत में सवाल यही है, 1 अप्रैल 2026 की डेडलाइन बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। क्या संगठन इसके लिए तैयार है? ये कोड सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये भारत में काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। अब सिर्फ जानकारी रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्शन लेने का समय आ गया है। आज की तारीख 21 फरवरी 2026 है और इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हुए सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश को प्रभावित करने वाला है। हाँ, जो कि अब मतलब बहुत ही करीब है। बिल्कुल, यानी अब से कुछ ही हफ्तों दूर भारत का जो कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल नियामक ढांचा है, जिसे हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं, वो पूरी तरह बदलने वाला है। तो आज के इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य और मिशन एक ही है, और वो है भारत के 4 न्यू लेबर कोड्स 2026 को बारीकी से डिकोड करना। सही बात है, और ये डिकोड करना अभी सबसे जरूरी काम बन चुका है। वही तो, हमारे पास आज सोर्सेस का एक लंबा चौड़ा स्टैक है जिसमें स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस मैनुअल, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड और एक्चुअरियल मैंडेट्स जैसे भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का निचोड़ अगर देखें तो ये बताता है कि पिछले कई दशकों से चले आ रहे 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर अब 4 नए कोड्स बना दिए गए हैं। हाँ, और ये 4 कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और OSH कोड। एग्जैक्टली, ये एक इतना बड़ा सिस्टम लेवल बदलाव है जिसे समझना हर प्रोफेशनल के लिए बेहद जरूरी है। मैं तो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही हैरान रह गई थी कि कितना डीप है। बिल्कुल, और सबसे पहली बात जो इन सोर्सेस से उभर कर आती है ना, वो ये है कि इन नए कोड्स को अब सिर्फ HR डिपार्टमेंट की फाइल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। मतलब पिछले कई दशकों से लेबर लॉज को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पेरोल प्रोसेसिंग का हिस्सा माना जाता था। हाँ, बस महीने के अंत में सैलरी स्लिप बन गई और काम खत्म। वही, लेकिन आज हम जिन मैनुअल्स और एक्चुअरियल गाइड्स को देख रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये अब फाइनेंस, लीगल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक मैंडेट बन चुका है। पूरा का पूरा मैथमेटिकल और ऑपरेशनल बेसलाइन फाउंडेशन बदल रहा है। यानी अब ये सीधा टॉप मैनेजमेंट का मुद्दा है। सही पकड़ा आपने। इसका असर सीधा कंपनी की बैलेंस शीट, उनके कैश फ्लोज और यहां तक कि डे टू डे ऑपरेशंस पर पड़ने वाला है। ये सिर्फ कंप्लायंस का कोई टिक बॉक्स नहीं है, ये बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का नियम है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पुराना जो अलाउंस हेवी सैलरी मॉडल होता था, उसके खत्म होने की बहुत चर्चा है इन सोर्सेज में। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो आमतौर पर बेसिक पे को काफी कम रखा जाता था और बाकी पूरी सैलरी अलग अलग अलाउंसेस में बांट दी जाती थी। बांट किस थी ये? सही कहा। तो ये पुराना मॉडल आखिर इतना लोकप्रिय क्यों था और नए कोड्स इसको कैसे रोकेंगे? मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझना चाहती हूँ। इसका सीधा सा जवाब है स्टैट्यूटरी कॉस्ट बचाना। देखिए, पुराने सिस्टम में कंपनीज बेसिक पे को टोटल सैलरी के 25 से 30% तक दबाकर रखती थी। क्यों? क्योंकि आपका प्रोविडेंट फंड यानी EPF और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन सिर्फ बेसिक पे पर होता था। अच्छा, तो बेसिक कम रखो ताकि PF और ग्रेच्युटी का प्रोविजन कम देना पड़े। बिल्कुल, अगर बेसिक पे कम होगी तो एम्प्लॉयर को अपने हिस्से का EPF कम देना पड़ेगा।
ये एक लूपहोल था जिसका सब फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब नया कोड ऑन वेजेस एक ट्राइपार्टाइट डेफिनेशन ऑफ वेजेस लेकर आया है। ट्राइपार्टाइट मतलब? 3 हिस्सों में बांटा गया है इसको। हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है ताकि इस लूपहोल को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। पहला हिस्सा है इंक्लूजन्स, जिसमें बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस आते हैं। ये तो क्लियर कट वेजेस हैं। दूसरा हिस्सा है एक्सक्लूजन्स, जिसमें एचआरए, कन्वेंस, स्टैट्यूटरी बोनस जैसी 8 स्पेसिफिक चीजें आती हैं जिन्हें वेजेस नहीं माना जाता। ठीक है, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स तो समझ आते हैं, पर तीसरा क्या है? तीसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है कंडीशनल इंक्लूजन्स। इसे हम आम भाषा में 50% रूल कहते हैं। यहां पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि कानून ने एक मैथमेटिकल फेल सेफ बना दिया है। फेल सेफ वो कैसे काम करता है? नया नियम कहता है कि अगर आपके एक्सक्लूजन्स यानी वो सारे अलाउंसेस जिन पर आप पीएफ नहीं देते, अगर वो टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसे ऑटोमेटिकली वेजेस मान लिया जाएगा और उस पर पीएफ और ग्रेट्युटी देना पड़ेगा। ये बेसिक पे को आर्टिफिशियली कम रखने की प्रैक्टिस पर एक डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक है। तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं ताकि इसका गणित पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक सिनेरियो है जहां किसी की टोटल सीटीसी या मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। पहले के मॉडल में उसकी बेसिक पे शायद 30,000 होती थी और बाकी 70,000 एचआरए और कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते थे। हाँ, क्लासिक स्ट्रक्चर है ये। हाँ, तो नए नियम के आने के बाद इस सैलरी स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन कैसे बदल जाएगा? मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहती हूँ। चलिए इसका नया गणित लगाते हैं। टोटल सैलरी है 1 लाख। नए 50% रूल के अनुसार आपके टोटल अलाउंसेस या एक्सक्लूजन्स आपकी टोटल सैलरी के आधे यानी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, पर हमारे एग्जाम्पल में तो अलाउंसेस 70,000 है। एग्जैक्टली, यानी लिमिट से 20,000 ज्यादा हैं। अब कानून कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है उसे अलाउंसेस की कैटेगरी से निकालकर ऑटोमेटिकली बेसिक पे वाले हिस्से में जोड़ दिया जाएगा। तो अब स्टैट्यूटरी कैलकुलेशंस के लिए नया बेस 30,000 नहीं रहेगा, बल्कि 30,000 प्लस 20,000 हो जाएगा। ओ, यानी नया बेस 50,000 हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो पीएफ और ग्रेच्युटी का बिल अचानक से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और ये सीधा एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ाएगा। मील कूपन्स, फ्यूल कार्ड्स या कंपनी लीज्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि वेजेस का बेस ना बढ़े। क्या उन चीजों पर भी इस नए रूल का कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और यहाँ कानून ने बहुत बारीकी से काम किया है। इसे रेम्यूनरेशन इन काइंड कहा जाता है। अगर कंपनीज कैश अलाउंसेस की जगह इस तरह के नॉन कैश बेनिफिट्स देती हैं, तो नए रूल्स में उसकी भी एक सख्त लिमिट तय कर दी गई है। वो लिमिट क्या है? ये लिमिट है टोटल वेजेस का 15%। अगर इस 15% से ऊपर का कोई भी इन काइंड बेनिफिट दिया जाता है तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू को भी गिनकर वेजेस का हिस्सा मान लिया जाएगा। यानी एचआर और फाइनेंस को अब न सिर्फ कैश बल्कि मील वाउचर्स और फ्यूल जैसी हर छोटी चीज की एग्जैक्ट अकाउंटिंग करनी होगी। सही कहा, हर चीज अब ट्रैक होगी। और यहाँ पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। जब ये बेस 30,000 से बढ़कर अचानक 50,000 हो जाएगा तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा। इसका सीधा असर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ पर और उससे भी बढ़कर हर महीने आने वाले पेचेक्स पर पड़ेगा। हाँ, वही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है आम एम्प्लॉइज के लिए, है ना? अगर बेस वेज बढ़ रहा है तो लोग ये सोच रहे होंगे कि उनकी टेक होम सैलरी पर इसका क्या असर दिखेगा। क्या टेक होम सैलरी सच में कम हो जाएगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका असर अलग अलग सैलरी ब्रैकेट्स पर बिल्कुल अलग तरह से होगा। देखिए, ईपीएफ एक्ट के तहत पीएफ कंट्रीब्यूशन पर 15,000 की एक स्टैट्यूटरी लिमिट है। मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था उस बारे में। उस रूलिंग में क्या था? उसके तहत एम्प्लॉयर्स चाहें तो अपना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इस 15,000 की लिमिट पर कैप कर सकते हैं। तो जो सीनियर या मिड लेवल एम्प्लॉइज हैं जिनकी बेसिक सैलरी नए रूल से पहले ही 15,000 से ऊपर थी, उनके केस में कंपनी शायद पीएफ कंट्रीब्यूशन को उस कैप पर ही रोक दें, तो वहां ज्यादा असर नहीं दिखेगा। अच्छा, तो उनकी इनहैंस सैलरी बची रहेगी, पर जूनियर एम्प्लॉइज का क्या? असली असर वही दिखेगा, जूनियर लेवल एम्प्लॉइज या फैक्ट्री वर्कर्स पर। मान लीजिए किसी जूनियर वर्कर की बेसिक सैलरी पहले 12,000 थी और टोटल सैलरी 24,000 थी। अब 50% रूल लगने से अगर उसकी नई बेसिक बढ़कर 18,000 हो जाती है तो एम्प्लॉयर को अब ज्यादा पीएफ देना होगा। और एम्प्लॉय के हिस्से का जो 12% डिडक्शन होता है वो भी तो बढ़ जाएगा ना? एग्जैक्टली। नतीजा ये होगा कि एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन बढ़ने से उनके बैंक अकाउंट में आने वाली टेक होम सैलरी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। लंबे समय की सेविंग्स तो बढ़ेंगी, लेकिन महीने के आखिर में हाथ में आने वाला कैश कम हो जाएगा। रुकिए, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है मुझे। अगर लोगों की टेक होम सैलरी कम हो रही है और ग्रॉस कैलकुलेशन बदल रहा है, तो मैंने इन गाइड्स में एक टर्म पढ़ा था, ईएसआईसी कवरेज पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स क्या है? क्योंकि अगर बेसिक या वेजेस बढ़ रही हैं तो लोगों को ईएसआईसी की लिमिट से बाहर निकल जाना चाहिए ना। अंदर कैसे आ रहे हैं लाखों नए लोग? ये ईएसआईसी पैराडॉक्स सच में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हैरान तेज नतीजा है नए कानून का। चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। पहले ईएसआईसी का फायदा उन्हें मिलता था जिनकी टोटल ग्रॉस सैलरी 21,000 तक होती थी। ठीक है। तो
आईटी या बीपीओ सेक्टर में जो फ्रेशर्स या जूनियर स्टाफ लगते थे, जिनकी ग्रॉस सैलरी मान लीजिए 24,000 होती थी, वो बाय डिफॉल्ट ईएसआईसी से बाहर होते थे। लेकिन अब नए रूल्स के तहत ईएसआईसी की एलिजिबिलिटी पुरानी ग्रॉस सैलरी पर नहीं, बल्कि नए कानून में दी गई वेजेस की डेफिनेशन पर तय होगी। और याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी कि नए वेजेस के एक्सक्लूजन्स हिस्से में एचआरए और कन्वेयंस शामिल नहीं है। ओह, तो उन अलाउंसेस को काउंट नहीं करेंगे अब? बिल्कुल नहीं। तो अब कैलकुलेशन उल्टा होगा। अगर उसी 24,000 ग्रॉस वाले एम्प्लॉय की सैलरी में से आप 6,000 एचआरए निकाल दें, तो नए कानून की नजर में उसकी वेजेस रह जाएंगे सिर्फ 18,000। और क्योंकि 18,000 स्टैट्यूटरी लिमिट यानी 21,000 से कम है, तो वो एम्प्लॉय अचानक से ईएसआईसी के दायरे में आ जाएगा। ओह, अब समझ आया। इस पैराडॉक्स की वजह से आईटी और सर्विस सेक्टर्स के लाखों जूनियर एम्प्लॉयज अचानक से ईएसआईसी नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। आई तो, और ये नंबर्स बहुत बड़े होने वाले हैं। लेकिन इस ईएसआईसी पैराडॉक्स का एक बहुत बड़ा फायदा भी तो है, खासकर मैटरनिटी बेनिफिट के मामले में। सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि जब फीमेल एम्प्लॉयज ईएसआईसी के दायरे में नहीं आती थीं, तो उनकी 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव का पूरा आर्थिक बोझ एम्प्लॉयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी पीएनएल पर पड़ता था। अब क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं ईएसआईसी के कवरेज में आएंगी, तो क्या ये बोझ शिफ्ट हो जाएगा? जी हाँ, ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, खासकर उन सेक्टर्स में जहां महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है। मैटरनिटी बेनिफिट का पूरा कॉस्ट अब कंपनी के पीएनएल से हटकर ईएसआईसी के फंड पर चला जाएगा। ये बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है, जिसे सोर्सेज में एक्चुएरियल सुनामी कह रहे हैं। एक्चुएरियल सुनामी? ये तो सुनने में ही काफी डरावना लग रहा है। ये किस चीज से जुड़ा है? ये जुड़ा है ग्रेचुइटी से। देखिए, पीएफ में तो 15,000 के अपर कैप है, लेकिन ग्रेचुइटी में ऐसी कोई सैलरी कैप नहीं होती। ग्रेचुइटी का पूरा कैलकुलेशन लॉस्ट ड्रॉन वेज पर होता है। यानी अगर नए 50% रूल की वजह से बेस वेज अचानक से 30-40% बढ़ जाती है, तो ग्रेचुइटी का पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। पर क्या इसका असर सिर्फ आगे आने वाले सालों पर पड़ेगा या पिछली सर्विस पर भी? इन डॉक्यूमेंट्स में एक टर्म है रेट्रोएक्टिव इन्फ्लेशन। क्या ये उसी से जुड़ा है? बिल्कुल उसी से जुड़ा है, और यही सबसे बड़ा डर है कॉर्पोरेट सर्कल्स में। ग्रेचुइटी का नियम है कि वो पिछले सारे सालों की सर्विस पर करंट सैलरी के हिसाब से लगती है। अगर किसी ने 15 साल काम किया है और उसकी बेसिक सैलरी आज अचानक से नए कानून की वजह से बढ़ जाती है, तो पिछले 15 सालों की सर्विस की ग्रेचुइटी इस नई बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। बाप रे, पूरा पास्ट लायबिलिटी इन्फ्लेट हो जाएगा। ये तो करोड़ों का खर्चा हो सकता है बड़ी कंपनियों के लिए। एकदम सही। इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने फिक्स टर्म एम्प्लॉइज यानी जो कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म पर काम करते हैं, उनके लिए एक और बड़ा बदलाव किया है। पहले ग्रेचुइटी पाने के लिए 5 साल लगातार काम करना जरूरी था, लेकिन अब फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही प्रोपोर्शनेटली ग्रेचुइटी देनी होगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ या सीएफओ हूँ, तो आखिर ये सारी मैथ्स मेरी पीएनएल बैलेंस शीट को कैसे हिट करेगी? क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ एचआर सिस्टम अपडेट करने तक तो सीमित नहीं है। सीएफओस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसकी वजह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, खासकर इंड AS 19 और AS 15। देखिए, एक्चुअलीज ने यह साफ कर दिया है कि ये नया कानून लागू होना अकाउंटिंग की भाषा में एक प्लान अमेंडमेंट माना जाएगा। प्लान अमेंडमेंट का एक्चुअल बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट होता है? इसकी वजह से ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट का जो बोझ पिछले सालों का बढ़ेगा, उसे पास सर्विस कॉस्ट कहा जाता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कार लोन लिया था और 5 साल तक आराम से ईएमआई दे रहे थे। अचानक बैंक बोले कि आने वाले 5 साल का पूरा इंटरेस्ट आपको आज ही एक साथ भरना पड़ेगा। ओह माय गॉड, वो तो पूरा कैश फ्लो हिला देगा। कंपनीज के पीएनएल के साथ यही होने वाला है। अकाउंटिंग के नियम कहते हैं कि इस पास सर्विस कॉस्ट को आप आने वाले कई सालों में धीरे धीरे अमोर्टाइज या स्प्रेड आउट नहीं कर सकते। इसे आपको तुरंत अपने करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ दिखाना होगा। इसका सीधा नतीजा तो ये होगा कि FY 2026 के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अचानक से पूरी तरह कंप्रेस हो जाएंगे और प्रॉफिट्स बहुत कम दिखने लगेंगे। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर मिफें, तो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोविजंस या पहले डर की वजह नहीं है। एक और टेक्निकलिटी है जो किसी बुरे सपने जैसी है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट का चेकमेट सर्विसेज जजमेंट कहते हैं। ये चेकमेट सर्विसेज जजमेंट क्या है? मैंने इसका रेफरेंस पढ़ा था, पर डिटेल नहीं समझ आई। टैक्स लॉस के सेक्शन 36(1)(v) के तहत अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का पीएफ या ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन जमा करने में स्टैट्यूटरी डेडलाइन से 1 दिन की भी देरी की, जो आमतौर पर महीने की 15 तारीख होती है, तो उस अमाउंट पर मिलने वाला पूरा टैक्स डिडक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1 दिन की देरी और डिडक्शन पूरी तरह गया? हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस पूरे अमाउंट को एम्प्लॉयर की टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। फिर तो किसी टेक्निकल ग्लिच जैसे बैंक का सर्वर डाउन होने या पेमेंट गेटवे फेल होने पर भी कंपनी सीधा टैक्स पेनल्टी के दायरे में आ जाएगी। और इस ऑफ साइकिल पेमेंट के प्रेशर को और बड़ा बना रहा है 48 आवर रूल।
हाँ, 48 आवर रूल तो अपने आप में एक अलग नाइटमेयर है। इन सोर्सेज के ड्राफ्ट रूल्स में जिक्र है कि पहले जब कोई एम्प्लॉय इस्तीफा देता था या उसे निकाला जाता था तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आराम से अगले महीने की पेरोल साइकिल में होता था, जिसमें IT, एडमिन, HR सबसे क्लियरेंस आने में 30 से 45 दिन लग जाते थे। लेकिन अब चाहे रेजिग्नेशन हो या टर्मिनेशन, 48 घंटे के अंदर अंदर सारी वेजेस और लीव इनकैशमेंट का हिसाब चुकता करना अनिवार्य होगा। ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन होगा? प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये ट्रेजरी और IT डिपार्टमेंट्स के लिए सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसके लिए कंपनीज को 2 चीजें करनी होंगी। पहला, अपने पास हमेशा एक वर्किंग कैपिटल या कैश बफर रखना होगा ताकि ऑफ साइकिल ऑफ बोर्डिंग पेमेंट्स तुरंत प्रोसेस की जा सके। और दूसरा क्या होगा? और दूसरा, HR और क्लियरेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से डिजिटली ऑटोमेट करना होगा। अगर किसी का लैपटॉप वापस आने का वेट करते रहे तो 48 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यह सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ओवरहॉल का मामला है। तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट और सिस्टम ऑटोमेशन पर तो भारी असर पड़ेगा ही, लेकिन बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। पैसों के अलावा लोग एक्चुअली ऑफिस में कितनी देर और किस माहौल में काम करेंगे, इस पर भी उतना ही बड़ा भूकंप आने वाला है, जिससे सोर्सेज OSH कोड यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बुला रहे हैं। इस कोड का असर पहले तो सिर्फ फैक्ट्रीज पर होता था ना? पहले ऐसा ही था। पहले फैक्ट्रीज एक्ट जैसे सख्त कानून सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स या माइंस पर लागू होते थे। IT और सर्विस सेक्टर वाले स्टेट लेवल के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत आते थे, जहां वर्किंग कंडीशंस को लेकर कंप्लायंस काफी आसान होती थी। हाँ, IT कंपनीज में उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था। लेकिन अब ये पैराडाइम शिफ्ट है। अब OSH कोड उन सभी IT पार्क्स, BPOs, कंसल्टेंसीज और सर्विस एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यानी अब AC वाले कॉर्पोरेट ऑफिसेस को भी लगभग उन्हीं सख्त सेफ्टी और हेल्थ पैमानों पर परखा जाएगा जैसे पहले फैक्ट्री फ्लोर्स को परखा जाता था। और इस नए फ्रेमवर्क का सीधा असर छुट्टियों की पॉलिसी पर भी साफ दिख रहा है। नए रूल्स लीव्स के इनकैशमेंट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। पहले एक स्टैंडर्ड था कि किसी वर्कर को एनुअल लीव्स का हकदार बनने के लिए साल में 240 दिन काम करना पड़ता था, लेकिन नए मैनुअल कहते हैं कि अब ये लिमिट घटाकर सिर्फ 180 दिन कर दी गई है। बिल्कुल, और लीव कैरी फॉरवर्ड के नियम भी बदल गए हैं। वही मैं बोलने वाली थी। सबसे बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि अब कोई भी एम्प्लॉय 30 दिन से ज्यादा अपनी बची हुई छुट्टियां अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। जो भी एक्स्ट्रा छुट्टियां होंगी उनका मैंडेटरी एनकैशमेंट होगा। ये साल के अंत में एक और कंपलसरी कैश आउटफ्लो बन जाएगा। जी हाँ, और इसमें स्टेट्स के अपने रूल्स भी जुड़ रहे हैं जिससे कंप्लायंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली और NCR रीजन की बात करें तो इन सोर्सेज में दिल्ली का अपना एक नया दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2026 हाईलाइट किया गया है। उस बिल में क्या खास है? इस नए अमेंडमेंट ने वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो दी है, जिसके तहत अब दिन में 10 घंटे और हफ्ते में मैक्सिमम 60 घंटे काम करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन यहां OSH कोड का नियम ओवर रूल करता है कि स्टैंडर्ड आवर्स के बाद किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए ओवरटाइम अब डबल रेट पर देना होगा। यानी 10 घंटे की शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी तो दे रही है, पर उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। दिल्ली वाले इस बिल में IT सेक्टर और BPOs के लिए रात की शिफ्ट्स को लेकर भी कुछ नए मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, खासकर महिलाओं के लिए। इन सोर्सेज के अनुसार महिलाएं नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत सख्त फ्रेमवर्क अनिवार्य होगा। सबसे पहले उनकी एक्सप्लिसिट रिटन कंसेंट लाजमी होगी। सही बात है, सिर्फ कंसेंट ही नहीं और भी बहुत कुछ है। हाँ, उसके साथ साथ कंपनी को उन्हें लेने और छोड़ने के लिए GPS ट्रैक ट्रांसपोर्ट, पूरे ऑफिस कैंपस में CCTV कैमरास और ऑन साइट डेडिकेटेड सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया कराने होंगे। ऐसा ना करने पर भारी पेनल्टी लग सकती है। इसका असर तो सीधा ट्रांसपोर्ट और ऑपरेशंस बजट पर आएगा। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि इन सभी कानूनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट लेबर और थर्ड पार्टी वेंडर्स का क्या होगा, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट्स हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और यहां तक कि बहुत से IT बैक एंड रोल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पर बहुत निर्भर करते हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग तो आजकल हर बड़ी कंपनी करती है। OSH कोड के आने के बाद जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यानी जो मुख्य कंपनी है जो वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उसकी जिम्मेदारियां एक्सपोनेंशियल हो जाएंगी। नया रूल कहता है कि अगर वेंडर अपने वर्कर्स को टाइम पर PF, ESI या वेजेस नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को लीगली वो पैसा देना पड़ेगा। यहां तक कि कैंटीन और क्रीच जैसी वेलफेयर फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को देने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मुख्य कंपनी की ही होगी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर मैनुअल्स में एक फ्रेज बहुत हाईलाइट किया गया है, कोर एक्टिविटीज। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। कानून कहता है कि कंपनीज अपनी कोर एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देंगी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो इसका बिजनेस ऑपरेशंस पर क्या असर पड़ेगा? कोर एक्टिविटीज का बेसिक मतलब है आपकी कंपनी का मुख्य बिजनेस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। उस कंपनी के लिए कोड लिखना और IT सॉल्यूशंस बनाना एक कोर एक्टिविटी है। ठीक है, समझ गई। नए रूल्स के मुताबिक ये IT कंपनी अब सॉफ्टवेयर कोडिंग के मुख्य काम के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं रख सकती।
लेकिन वही आईटी कंपनी अपने ऑफिस की सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग या कैफेटेरिया चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ रख सकती है, क्योंकि वो उनका नॉन कोर काम है। एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे अब हॉस्पिटल में एग्जैक्टली एक हॉस्पिटल अपने प्राइमरी पेशेंट्स के इलाज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सेज नहीं रख पाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर उनकी कोर एक्टिविटी है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए हर साल मिनिमम 2% एनुअल इंक्रीमेंट का नियम भी प्रस्तावित है। तो एज अ होल वेंडर मैनेजमेंट पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होने वाला है। इन सब बातों को सुनकर एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, क्या इस आर्थिक शॉक और मैथमेटिकल बर्डन को हैंडल करने के लिए कंपनीज एक आसान रास्ता नहीं चुन सकती? क्या वो सिंपली अपने एम्प्लॉयज की टोटल सीटीसी या बेसिक पे को कम करके स्ट्रक्चर को दोबारा डिजाइन नहीं कर सकती, ताकि एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी न्यूट्रल रहे और कंपनी की बैलेंस शीट पर नया स्टैट्यूटरी बोझ भी ना बढ़े? मैं सोच रही थी कि ये तो सबसे आसान सोल्यूशन होगा। ये थॉट काफी टेम्पटिंग लगता है, लेकिन ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में एक सेक्शन 124 शामिल किया गया है, जिसे हम एंटी इवेजन सेफगार्ड कहते हैं। ये सेक्शन इस तरह की किसी भी चालाकी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कानून ने इस लूपहोल को पहले ही ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल, इसका नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी कंपनी अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या लाइबिलिटी बचाने के लिए एम्प्लॉयज की एग्जिस्टिंग सैलरी, वेजेस या उन्हें मिलने वाले टोटल बेनिफिट्स को कम नहीं कर सकती। अगर लेबर इंस्पेक्टर्स ऑडिट में ये देखते हैं कि बेसिक सैलरी इसलिए घटाई गई है ताकि पीएफ या एएसआई का नया बोझ न्यूट्रलाइज हो जाए, तो इसे डेलिबरेट इवेजन माना जाएगा। और तब तो भारी जुर्माना लगता होगा। इस पर भारी जुर्माना और पिछली डेट से रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज लग सकती हैं। अगर किसी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना ही है तो उसके पीछे एक बहुत ही ठोस डॉक्यूमेंटेड बिजनेस जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस या कोई मेजर बिजनेस डाउनटर्न। सिर्फ टैक्स या स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बचाने की मंशा से आप वेजेस कम नहीं कर सकते। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर हम सम अप करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नए लेबर कोड्स भारत के कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा का समय है। हम पुराने जुगाड़ और लूप होल वाले सिस्टम को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां कंप्लायंस हाईली ट्रांसपेरेंट, डिजिटली इंटीग्रेटेड और मैथमेटिकली बहुत रिगरस होने वाली है। सही कहा आपने। एचआर, फाइनेंस, आईटी और लीगल डिपार्टमेंट्स अब अपनी अलग अलग दुनिया में अकेले काम नहीं कर सकते। उन्हें एक फोर्स की तरह मिलकर काम करना होगा, कॉम्प्लेक्स एक्चुअरी रिपोर्ट्स पर डिपेंड होना होगा और अपने सारे इंटरनल सिस्टम्स को नए सिरे से बनाना होगा, ताकि अप्रैल 2026 की इस कठोर और अनिवार्य डेडलाइन से पहले सब कुछ लाइन में लाया जा सके। चर्चा को निष्कर्ष तक लाने से पहले मैं एक आखिरी विचारोत्तेजक प्रश्न या प्रोवोकेटिव थॉट सामने रखना चाहूंगा, जिसका हिंट इन डॉक्यूमेंट्स में है लेकिन आमतौर पर बात नहीं होती। हमने अभी तक ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट स्टाफ और फैक्ट्री वर्कर्स की चर्चा की, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा जो स्विगी, जोमैटो या उबर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं? हाँ, गिग इकोनॉमी के लोग, उनके लिए क्या है इन कोड्स में? नए नियम के अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी एक नए सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया है। कानून यह मैंडेट करता है कि इन टेक एग्रीगेटर्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा, जो सीधा उन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेलफेयर में जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। वही सोचने वाली बात यह है कि जब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पहले से ही हाईली कंपेटिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स और पतले प्रॉफिट मार्जिन्स इस नए स्टैट्यूटरी टैक्स से टकराएंगे, तो इसका आखिरी असर कहां पड़ेगा? क्या टेक्नोलॉजी का पूरा बिजनेस मॉडल और उनकी एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमेशा के लिए बदल जाएगी? और सबसे बढ़कर इसका असर हमारी हर रोज की कैब राइड्स और फूड डिलीवरी की कीमतों पर क्या होने वाला है? ये एक ऐसी चर्चा है जो आने वाले महीनों में बहुत गर्माती हुई दिखाई देगी। वाकई ये एक ऐसी स्थिति है जिसके रिपल सिर्फ बोर्डरूम्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर रोज की कंज्यूमर इकोनॉमी को भी डीप लेवल पे प्रभावित करेंगे। इस नए कानून का असर हर स्तर पर महसूस किया जाएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में इन कॉम्प्लेक्स कानूनों की बारीकियां समझने का उद्देश्य यही था कि 1 अप्रैल 2026 के बाद शुरू होने वाली इस बदली हुई दुनिया के लिए फ्रेमवर्क और माइंडसेट पूरी तरह से तैयार रहें। इस चर्चा में शामिल होने और इन न्यूएंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद।
Welcome to The Explainer. We're about to break down a huge, and I mean huge, shift coming to India's entire business landscape. There are 4 new labor codes on the horizon, and believe me, the financial impact is going to feel like a shockwave for pretty much every company out there. So let's jump right in. You see that quote? It calls this a financial earthquake, and that is not an exaggeration. Come April 1st, 2026, the very foundation of how businesses in India figure out pay, manage their costs, all of it is about to be completely rewired. So why is this such a big deal? Let's get into it. So what is this rewiring I'm talking about? Well, this isn't just some minor tweak or a little update. Nope. What India is doing here is a total ground-up consolidation of its incredibly complex, kind of messy labor laws. So check this out. India is basically taking this patchwork quilt of 29 different laws and boiling it all down into 4 much simpler, unified codes. Now, on the surface, the goal is simplification, right? Makes sense. But, and this is the important part, hidden inside all that simplifying is one single powerful new rule that's about to set off a massive financial chain reaction. Okay, so this whole financial shockwave we're talking about, it all comes down to a brand new uniform definition for one single word: wages. It sounds simple, but trust me, this one little change is going to have massive consequences for every single employer in the country. You see, for decades, the playbook for companies was pretty simple. To keep costs like Provident Fund and gratuity down, they'd keep the basic pay part of a salary really low, and then load up the rest with all kinds of allowances. Well, this new rule just flips the whole game board over. It says, nope, you can't do that anymore. From now on, those allowances cannot be more than half of an employee's total pay. Period. The way the law works is actually pretty straightforward. It's this simple but really powerful 3-step process. First, you take the core pay. Then, you identify all the other allowances. And then, here's the kicker. You run the test. If all those allowances add up to more than 50% of the total pay, any amount over that 50% mark gets grabbed and thrown right back into the official wage calculation. And wow, this example really drives the point home. Let's take an employee with a total package, a CTC, of 1 lakh rupees a month. In the old system, their official wage for all these calculations might have been just 30,000. But now, under the new code, since their allowances make up 70% of their pay, that's 20% over the limit, right? So that extra 20,000 rupees gets added back in. All of a sudden, their statutory wage base jumps from 30,000 to 50,000 rupees. That's a 67% increase literally overnight. So here's the crucial thing to understand. This higher wage base, it's not just a number on a spreadsheet. No way. It sets off a domino effect, a chain reaction of exploding costs for the company, right across the board. So how exactly does that happen? Let's take a look. Okay, first up, the most obvious hit, the Provident Fund, or PF. I mean, it's simple math. Both the company's contribution and the employee's contribution are based on a percentage of this new, much, much larger wage base. So for a whole lot of people, those monthly PF deductions are about to get a lot bigger. Then you've got this really weird, kind of paradoxical situation with the employee's state insurance, or ESI. You see, the wage calculation for ESI excludes house rent allowance. So what does that mean? It means some employees, let's say they're earning around 25,000 rupees a month, who were previously above the ESI limit, could actually see their new official wage drop below the 21,000 rupee threshold. And just like that, they get pulled into the ESI system when they weren't in it before. Strange, right? But honestly, the real financial shocker, the thing that people are calling an actuarial tsunami, that comes from the long-term liabilities. And the biggest, most dangerous one of all, gratuation. Okay, so why is this so scary for companies? Well, gratuity is calculated based on an employee's last drawn salary.
Think about that. When this new 50% rule suddenly inflates that final salary number, it doesn't just apply going forward. No, it retroactively increases the gratuity payment for every single year that person has already worked for the company. So for a senior employee, someone who's been there for a long time, the company's total gratuity liability could just explode. We're talking a potential jump of over 66% all in one go. And of course, this kind of financial bombshell creates all sorts of other hidden dangers, especially when you look at a company's books, their accounting, and their tax filings. You know, the accounting rules, things like Ind AS 19, are crystal clear on this. This huge retroactive spike in gratuity liability, it's officially called a plan amendment. And what that means is that the entire cost, every last rupee, has to be recognized as an expense in the 2026 financial year. It's a direct one-time smash to the company's profits. There's no spreading it out over time. It all hits at once. Now let's switch gears to the tax risk, because this is serious. It's all governed by a super strict Supreme Court ruling, often called the checkmate doctrine. Basically, the court says that employers are holding their employees' money in trust. They're a fiduciary. And the penalty for messing up? It's brutal. If a company is just one day late in depositing the employee's portion of their PF contribution, just one day, they permanently lose the tax deduction for that entire amount. It just becomes taxable income forever. No appeals, no second chances. So you can see how the stakes for getting payroll absolutely perfect have just gone through the roof. So when you put all of this together, one thing becomes incredibly clear. Getting through this transition isn't a job for just one department. This is an all-hands-on-deck situation that needs a totally coordinated approach. You absolutely cannot just dump this on the HR department and walk away. With the kind of financial shocks, the tricky accounting rules, and the very real legal risks we're talking about, this has to be a joint mission. You need a task force with people from finance, from legal, and from HR, all working together. And each of these teams has a critical piece of the puzzle. HR, they've got the tough job of actually restructuring salaries, and maybe even harder, communicating all these changes to employees. Finance, well, they've got to model out all the costs, figure out how to manage the cash flow shock, and prepare the books for that big P&F hit. And of course, legal has to be looking over everyone's shoulder, making sure every single move is compliant so the company doesn't get sued down the line. And there's one more really important warning, and this one is written right into the law itself. Section 124 pretty much says you can't be sneaky about this. It explicitly forbids companies from trying to restructure salaries in a way that just reduces an employee's total benefits to try and dodge these new costs. If you're going to restructure, you better have a real, genuine business reason for it. So, all of this leaves us with one last absolutely crucial question for every single business leader in India. All the hard work to get ready for this, the financial modeling, the salary restructuring, the system upgrades, all of it has to start now. Because April 1st, 2026, well, that's not the starting line, that's the finish line. It's the day your plan has to be up and running perfectly. So the real question is your business ready? Welcome back to the deep dive. It is Saturday, February 21st, 2026. Time is definitely flying. Yeah, it really is. And, you know, if you're listening to this right now, you might be enjoying a slow weekend coffee, maybe planning a trip. Right. But if you work in HR, or if you sit in the CFO's office, or honestly, if you run any kind of business in India,
you are probably looking at your calendar with a mild or maybe major sense of existential dread right now. Well, I mean, dread is a strong word, but I'd say acute alertness is definitely warranted here. It's acute alertness. I like that. We are roughly 5 weeks away from April 1st, 2026. Yes. And usually that's just the start of the new financial year, right? New budgets, new sales targets. The usual corporate cycle. Exactly. But this year, April 1st is very different. It is the day the rubber finally meets the road for the 4 labor codes. That's right. And we really need to emphasize that this isn't just an update. Right. It's not a patch to the existing system. This is a complete operating system rewrite for India Inc. A total rewiring. Exactly. Yeah. I mean, we're looking at the consolidation of 29 legacy central laws. 29. 29. Spanning over 1,228 sections of distinct legalese, all being compressed into just 4 consolidated codes. That is massive. It really is. The source material frames this as moving from a system of regulatory friction to a completely new framework of digitally integrated compliance. And that right there is exactly our mission for this deep dive today. We aren't just going to sit here and list the rules. Well, anyone can download a PDF for that. Right. Anyone can read the rules. We are going to decode what our sources are calling the macroeconomic rewiring of India's corporate landscape. Because it goes way beyond just filing a new form. Exactly. This changes how money moves, how companies are valued by investors, and honestly, what actually lands in your Java account as an employee at the end of the month. It creates a completely new baseline for corporate India. I mean, it fundamentally redefines the relationship between capital and labor, and perhaps more importantly, between the employer and the state. Yeah. And I know a lot of people hear the word regulation and their eyes just glaze over. Absolutely. Regulatory fatigue is a very real thing. It is. We've been hearing about these codes since, 2019? 2019, then 2020, then all the subsequent delays. Exactly. But stick with us here because the sources we have stacked up for today, from these really strategic compliance manuals to some very specific, slightly terrifying actuarial advisories. They paint quite a picture. They paint a picture of a financial tsunami. A tsunami that is about to hit the P&L statements of pretty much every company in the country. It's the kind of shift where if you aren't paying attention right now, you will absolutely be paying for it later. Literally. Literally. Yeah. In penalties, in tax disallowances, and in massive retroactive liabilities. So let's set the stage briefly before we get deep into the weeds. We have 4 pillars here. Right. The 4 codes. The Code on Wages, the Industrial Relations Code, the Social Security Code, and the OSH Code, which is Occupational Safety, Health, and Working Conditions. Correct. And as we said, these were actually passed by Parliament back in 2019 and 2020. It's been a long time coming. It has. The rules have been drafted, they've been redrafted, the state-level consultations are largely done now. So April 1st, 2026 is the hard go-live date. Okay, let's unpack the biggest disruption first. The thing that essentially underpins everything else we're going to talk about today. The uniform definition of wages. Yes. Our sources literally call this the core disruption. And it is the heart of the matter. To really understand why this is such a huge disruption, you have to look at how Indian salaries were structured historically. Right. We had what the sources refer to as the allowance-heavy era. Right. I think everyone who has ever looked at a salary slip in India knows exactly what we're talking about here. Oh, definitely. You have your basic pay, which is often surprisingly low, and then you just have this massive salad of allowances. A very creative salad sometimes. Yeah. HRA, conveyance, special allowance, attire allowance, journal allowance. I have literally seen some creative ones like soft furnishing allowance. And, it wasn't just for variety or HR creativity. It was a very specific financial strategy. A loophole, essentially. Basically, yes. It's known as regulatory arbitrage. By suppressing the basic pay to maybe 25 or 30% of the total pay, companies could legally minimize their liability for things like provident fund and gratuity. Right, because historically those statutory contributions, the PF and gratuity, were calculated strictly on that basic component. Exactly. So the lower the basic,
the lower the company's forced contribution to the Social Security net. It kept the cost to company of the CTC down while maximizing the actual liquid cash in hand for the employee. And everyone just winked and nodded and said, well, this is fine. Right. But obviously the government realized this was seriously eroding the long-term Social Security net. Yes. So the new codes come in and harmonize the definition of wages across all 4 statutes. New, more different definitions for different laws. Exactly. And to kill that arbitrage, they have introduced a mathematical failsafe. The 50% rule. Yes. Or in legal terms, the first proviso. Okay, let's break this first proviso down for our listeners. How does the math actually work now? It's essentially a tripartite definition. First, you have your inclusions. Okay. This is your basic pay dearness allowance, or DA and retaining allowance. That is your core. Got it. Second, you have your exclusions. These are things like house rent allowance, bonus, conveyance, overtime, and so on. Okay, so far that kind of sounds exactly like the old system. You have the taxable stuff and the exempted stuff. It does look similar on the surface, but here is the massive catch. Okay. The proviso states that if the sum of your exclusions exceeds 50% of the total remuneration, the excess amount is automatically deemed to be wages. Deemed to be wages. That is such a powerful legal magic phrase. It is. It basically means nice try, but we're counting that as salary anyway. Precisely. It means you simply cannot hide the money in random allowances anymore. And the government has confirmed this, as recently as the December 2025 illustrations, that this 50% threshold is calculated against total remuneration. Let's do a quick visualization because I think this math is super critical for people to grasp. Let's do it. Say I'm an employee earning 100,000 rupees a month. Right. Now, in the old days, maybe your basic was 30,000 and your allowances, the HRA, special allowance, all that, made up the remaining 70,000. So my wage for Social Security purposes, for my PF and my gratuity, was just 30,000. Correct. But under the new code, the law strictly says exclusions cannot exceed 50%. Right. In your case, 50% of 100,000 is 50,000. But your actual exclusions are 70,000. So that's 20,000 rupees over the legal limit. Exactly. That is 20,000 over the limit. And that extra 20,000 is forcibly added back to your wage base. Wow. So instead of paying PF and gratuity on 30,000, the company now has to calculate and pay it on 30,000 plus the deemed 20,000. Meaning my new base is 50,000. Yes. Your base is now 50,000. That is a massive, literally, overnight jump. We are talking about a 66% increase in the contribution base in that specific example. Yes, and that rips through everything. It hits gratuity, it hits leave encashment, it hits your PF. It is an immediate, unavoidable cost escalation for the employer. And that's just the cash components. I was reading in the source material about remuneration in kind. Yes. You know, the meal coupons, the Sodexo passes, the corporate fuel cards. The 15% threshold. This is another really strict anti-circumvention measure. Because they knew companies would try to get clever. Exactly. The government fully anticipated that if they clamp down on cash allowances, companies might just start paying people in Amazon vouchers or gold coins. Right. So the rule clearly says if an employer provides remuneration in kind in lieu of cash, and the value of that exceeds 15% of total wages, that excess is also counted as wages. So you really can't just swap cash for meal coupons to dodge the 50% rule? No, the net is drawn extremely tight. They have essentially closed the loop entirely on structuring salaries to avoid Social Security contributions. Which brings us perfectly to the part that I think is causing the absolute most heartburn in corporate finance departments across the country right now. The accounting shock. Yes. We talked about the cash flow impact, paying more PF every single month, but there is a massive accounting shock coming. This is segment 2 of our deep dive, the financial tsunami of IND AS19. This is exactly where the conversation has to move from the HR desk straight into the CFO's office. Right. This is no longer just a payroll issue. This is about the balance sheet and the profit and loss statement. So the sources mention a very specific advisory from the Institute of Actuaries of India dated January 27, 2026. Yes.
Why is this specific actuarial advisory so critical? Because it fundamentally clarifies how companies have to account for this massive change. You see, when you change the definition of wages, you inherently change the future liability for things like gratuity. Okay, explain that a bit more. Well, gratuity is a defined benefit plan. The company makes a legal promise to pay you a lump sum when you leave. Right. That promise is effectively a debt that the company owes you today. So if the legal definition of my wage goes up, the debt the company owes me goes up. Exactly. The big question for the accountants was, is this sudden increase in debt considered an actuarial loss, which is treated sort of like a prediction error or a change in demographic assumptions, or is it something else? And what was the verdict from the actuaries? The Institute classified it formally as a plan amendment. Plan amendment. I mean, that sounds fairly bureaucratic. Why is that distinction so scary for a CFO? Because under Indian accounting standards, specifically in AS 19, the accounting treatment for a plan amendment is absolutely brutal. Brutal how? It triggers what is called a past service cost. And past service costs must be recognized immediately in the profit and loss statement. Wait, immediately? You can't spread it out over the remaining working life of the employees? No. You can't amortize it over, say, 5 years to soften the blow? Amortization is strictly prohibited for plan amendments. You have to take the entire financial hit in the fiscal year that the change happens. Oh, wow. Yes. Since the notification came in November 2025 and is effective April 2026, companies closing their books in March 2026 have to record this massive spike in liability right now. So net income for FY 2025-26 is going to look very depressed. Significantly depressed. Yeah. We are talking about completely wiping out a chunk of profits for companies that have large, long tenure workforces. Right. Think about the big banks, legacy manufacturing giants, the PSUs. They have thousands of employees who've been on the payroll for 20 years. And to make it even more complex for the actuaries themselves, the sources say they have to run split period valuations. It's a total computational nightmare. Actuaries literally have to calculate liabilities for the period up to November 20, 2025 using the old legacy rules, Okay. and then calculate from November 21 onwards using the new code rules. It requires running two parallel mathematical realities in the actuarial software and then merging them for the final report. And this feeds directly into segment 3, the long-term liability explosion. We just touched on gratuity, but I really want to double-click on that. He deserves it. The sources use the phrase gratuity's retroactive sting. And honestly, this is the part of the deep dive that I found the most mind-blowing. Yes. And it's very counterintuitive for a lot of people. The common logic in management right now is, okay, the new law starts in 2026, so my gratuity costs increase from 2026 onwards. Right. That would be the fair, logical assumption. You don't usually change the rules for the game that has already been played. But gratuity is defined by law as 15 days of wages for every completed year of service, calculated on the last drawn wages. Ah, the last drawn wage. That is the multiplier. Exactly. So let's go back to our employee example. Let's say you've been with the company for 10 years. Okay. For those past 10 years, the company provisioned for your gratuity based on that 30,000 rupee basic salary. Right, because that was the law at the time. Right. Now, on April 1st, your legal wage suddenly becomes 50,000 rupees because of the 50% rule. Yeah. When you retire 5 years from now, the company doesn't split the math. They have to pay you gratuity for all 15 years based on that new 50,000 figure. So the increase applies retroactively to the 10 years I already worked, the years they already budgeted for. Yes. That is the retroactive sting. The multiplier effect is absolutely huge. The company suddenly has to top up the retirement pot for every single year you've already worked. That perfectly explains why that end AS19 hit is so massive. It's catching up on literally decades of under-provisioning in a single financial quarter. Precisely. And while this hits the old economy companies incredibly hard, there is a totally different revolution happening for the new economy. The fixed-term employees. Yeah, Section 53 of the Social Security Code.
This section genuinely feels like it was written specifically to target the gig economy and the modern contract workforce. It absolutely was. Historically, you only ever got gratuity if you stuck around at a company for 5 continuous years. Which, let's be honest, almost no contract employee ever did. Really? Companies would hire you for 11 months, renew the contract maybe 4 times, and then strategically terminate you at 4 years and 10 months just to save on the gratuity payout. It was a very cynical practice, but it was incredibly common across industries. Right. The new code completely kills that strategy. It says fixed-term employees, FTEs, get pro rata gratuity after just 1 year of service. 1 year. So suddenly all those project staff, the IT consultants, the gig workers, they are all effectively long-term liabilities on the balance sheet. It creates a baseline parity between permanent and contract staff, which is obviously the social goal of the legislation. Yeah. But financially speaking, it means companies need to start provisioning a gratuity from year 1. There is no 5-year cliff to save them anymore. If you hire a specialist consultant for a 2-year project, you owe them gratuity at the end of it. And speaking of liquidity and cash flow, we have to talk about leave encashment. The OSH code seems to have totally dismantled the use it or lose it policy that so many companies loved. That's right. And this is highly relevant for the service sector, especially in major hubs. The new OSH code actually drops the eligibility for taking leave from 240 days of work down to 180 days. So more people qualify for leave much sooner in their tenure? Yes. But the real kicker for finance teams is the carry forward cap. The cap is 30 days, right? Yes. You can legally carry forward up to 30 days of earned leave into the next year. But the law explicitly says anything over 30 days at the end of the calendar year must be encashed. Must be, not can be. Mandatory encashment. Previously, companies would let these huge leave balances accumulate. People would have 40, 60, even 90 days of leave saved up. Because it was just a number on a spreadsheet. It was just a provision. Exactly. They didn't have to pay actual cash until the person either quit or retired. It was purely paper money. And now it becomes real money. Real immediate money. At the end of every single calendar year, if you have 40 days of leave, the company has to physically pay you cash for those 10 excess days right then and there. So it transforms a completely dormant liability into an active annual cash outflow. It puts huge liquidity pressure on Treasury departments. You need actual cash on hand in December or March to pay out all that excess leave. You can't just treat it as a book entry anymore. Okay, so the company is paying a lot more. The liability is definitively higher. But let's flip the lens to the employee. This is segment 4, the employee's reality. Right. If my wages are legally going up to 50% of my total pay, does this mean I'm rich now? Well, you are richer in terms of long-term security. Your retirement pot is definitely growing faster. Okay. But in terms of the actual liquid cash hitting your bank account next month, you might actually feel quite a bit poorer. This is what our sources are calling the EPF squeeze. Yeah, it's just simple math. Your Provident Fund contribution is a flat 12% of your wages. Right. If the law forcibly pushes your wages up from $30,000 to $50,000, your 12% deduction obviously goes up proportionally. So my take-home pay decreases. Yes. The 12% is coming out of a much bigger slice of the pie. And HR departments have a massive communication challenge on their hands here. Oh, I bet. They have to explain to employees that this isn't a pay cut being imposed by the company. Right. The company isn't keeping that money. It's a state-mandated shift from liquid cash today to forced savings for tomorrow. That is going to be a really tough town hall meeting. Hey, congratulations, everyone. Your statutory wage just went up. Also, here is significantly less money for your rent this month. It will be very unpopular, especially with the younger demographic, who typically value immediate liquidity way over long-term security. Definitely. But there is a much weirder paradox in the sources regarding the ESIC, the Employees State Insurance System. They refer to it as the dragnet effect or the ESIC coverage paradox. This one is fascinating. ESIC is usually designed for lower income employees, right?
The statutory ceiling is 21,000 rupees a month. Correct. If your legal wages are below 21,000, you are mandatorily covered by ESIC. Now, historically, many companies kept a lot of their employees out of ESIC simply by showing a gross salary of, say, 25,000. Right, because 25 is higher than 21, so you're exempt. You don't have to pay the monthly contribution, and you don't get the state coverage. Correct. But now, remember the new definition of wages. It specifically excludes HRA and conveyance up to that 50% limit. Right. So let's look at that same employee earning 25,000 gross. Maybe 6,000 of that is HRA and 4,000 is conveyance. Okay, so those get subtracted when you are calculating the statutory wage. Exactly. So their statutory wage might drop all the way down to 15,000. And since 15,000 is suddenly below the 21,000 ceiling, They're suddenly dragged right back into the ESIC net. so they are earning the exact same gross amount, but they suddenly fall under the poverty line definition for state insurance. Yes, and this affects huge swaths of workers. Junior IT staff, retail workers, BPO employees. Suddenly, the employer is forced to pay a 3.25% ESIC contribution, and the employee has to pay 0.75% out of their own wages. Just another hit to the take-home pay? Indeed. But, and this is a really big but, there is actually a silver lining here, specifically for female employees. Yes, the maternity benefit shift. Right. Currently, under the Maternity Benefit Act, the employer is directly responsible for paying 26 weeks of full pay during maternity leave. Right. That is a direct, heavy cost to the company's bottom line. Which, as we know, unfortunately creates a huge hiring bias. It does. Small companies and startups are often terrified of hiring young women simply because they cannot afford a 6-month paid leave out of pocket. It's a sad reality of the market. But if an employee is legally covered by ESIC, the liability for paying that maternity benefit shifts entirely from the employer to the ESIC state fund. Oh, that is incredibly significant. So if these women in the 20 to 25K bracket get dragged into ESIC coverage, The company no longer pays for their maternity leave. Wow. It's a total systemic transfer of liability. The ESIC pays the benefit. So for sectors like retail, textiles, or BPOs that have high female participation, this could actually offset some of the other cost increases we've talked about. because the risk is mutualized. Exactly. It might even strongly encourage hiring more women in that specific salary bracket because the quote-unquote maternity risk is completely offloaded to the state. That is a fascinating unintended consequence of the math. It really is. Okay, let's move on to segment 5. We've talked extensively about costs, but now we really need to talk about process. And the sources use a term that honestly sounds like a legal thriller movie title. The checkmate doctrine. Yes, the checkmate doctrine. What is this? It does sound dramatic, doesn't it? Yeah. But it refers to a very real landmark Supreme Court judgment from 2022. Checkmate Services Private Limited versus CIT. Okay. It fundamentally and permanently changed how tax deductions work for employee contributions. So this is specifically about the money deducted from my paycheck for PF and E6, the employee's share. Yes. The Supreme Court ruled that when an employer deducts that money from your salary, they are holding it in a fiduciary capacity. Meaning they are holding it in trust. It's not the company's working capital, it's the employee's money. Precisely. It's not an operational expense, it's a deposit. And therefore, it absolutely must be deposited with the government by the statutory due date. Which is usually the 15th of the following month. Yes. And what if they miss it? Say there's a banking glitch or the payroll accountant is sick and they pay on the 16th. If they miss it by even one single day, the deduction is permanently lost as a tax expense. Wait, permanently lost. They can't just pay a late fine and clear it. Well, they still pay the late penalties. But for income tax purposes, that entire amount is treated as the employer's income. Income. It becomes taxable profit. And you cannot claim it as a deduction ever again, even if you eventually pay it to the PF authorities. Section 43B, which usually allows you to claim delayed expenses if you pay them before filing your annual tax return, specifically does not apply here. Wow. Okay. So
if a payroll glitch delays the transfer of, say, 1 crore rupees of PF contributions by just 1 day, The company has to pay corporate tax on that 1 crore as if it were pure profit. that is terrifying. It turns a simple process error into a massive, permanent financial loss. You are literally taxed on money that isn't yours. And the sources say this intense operational pressure is compounded by the new rule on full and final settlements. Ah, yes. The 48-hour settlement. This one blew my mind when I read it. I'm used to waiting 30, maybe 45 days for a final settlement after quitting a job. You return your badge, you say your goodbyes, and then you just wait for the money. Those days are completely gone. The new code on wages legally mandates that upon resignation, termination, or dismissal, the full and final settlement. Which includes everything. Everything, including that leave-in cash when we talked about, the gratuity, the pending salary. It must all be paid within 2 working days. 2 days? I mean, how is that even logistically possible for a large corporation? It's very difficult. You have to calculate the tax deductions, check for asset recovery, get sign-offs from 3 different managers. Did they return the laptop? Did they clear their travel advance? It requires an absolute ground-up re-engineering of the entire offboarding process. You simply cannot wait for the next regular monthly payroll cycle anymore. Right. You need automated off-cycle payment runs, and more importantly, you need massive liquidity buffers in the corporate treasury to handle sudden exits. Because you can't predict when someone will quit. Exactly. Imagine if 50 people leave in a single week across the company. You need that cash available to deploy right now. It sounds like an operational nightmare for HR and finance. It really is checkmate for lazy or legacy payroll processes. If your systems aren't running in real time, you're going to violate the law on day 1. Let's move on to segment 6, the modern workplace. This covers the OSH Code Occupational Safety and Health. Yes. It seems like the traditional legal distinction between a factory and a corporate office is getting very blurry here. It is. The OSH code largely dismantles that old dichotomy. It applies rigorous safety and welfare standards to almost all establishments now, not just the ones with smokestacks and heavy machinery. We have some very specific notes on Delhi in the sources here, which I assume kind of acts as a template or bellwether for how other metros will handle the state rules. Yes, the Delhi-specific nuances are a great indicator. For instance, legally permissible working hours are increased to 10 daily or 60 weekly. Which fundamentally changes how overtime is calculated. Exactly. Overtime only kicks in after these expanded limits are crossed. But the really big social change is regarding night shifts for women. Right. Women are formally allowed on night shifts now across the board, right? From 7 p.m. to 6 a.m.? Yes, but with incredibly strict caveats. It's not just a blanket allowed. The employer mandatorily must provide GPS-tracked transport from home to office and back. Sorry. They need full CCTV coverage, well-lit pathways on the premises, and they must obtain explicit written consent from the employee. So it's recognized as a right, but it comes with a very heavy infrastructure price tag for the employer. Safety isn't cheap. If you want to run a 247 BPO or tech support center with a genuinely gender-diverse workforce, you have to actively invest in the physical hardware of safety. Can companies just outsource this headache? Like, let's just hire a contractor to handle the night shift staff and let them deal with the transport and the CCTV. That was the old model. But the OSH code creates a principal employer risk that is so much stricter than before. And crucially, it completely prohibits contract labor in core activities. Core activities. That sounds very vague. I mean, who decides what is core to a business? That is exactly the danger zone. If you are a software development company, coding is obviously a core activity. Right. You legally cannot hire contract labor for that anymore. You have to hire them on the direct roles of the company. If you are a car manufacturer, assembly line work is core. Okay, but what about for the non-core stuff, like cleaning staff, cafeteria workers, security guards? Even there, the vicarious liability is massively enhanced under the new codes. If your contractor fails to pay their workers' wages or defaults on their PF deposits, you, the principal employer,
must step in and pay it. The buck legally stops with you. Literally. Yeah. You cannot wash your hands of it just because you outsourced it. And the sources even mention a draft rule floating around about a mandatory 2% annual increment for contractor employees. Really? Yes. To keep them excluded from certain definitions and protections, you essentially have to guarantee that their wages rise every year. So you really need strict stop payment clauses in all your vendor contracts moving forward. Absolutely essential. If the vendor doesn't show you hard proof of their PF and e-sick payment receipts for that month, you stop their invoice immediately. You need the right to recover mechanisms written clearly into the master service agreement. It sounds like the legal department needs to sit down and rewrite literally every single vendor contract before April. They do. And add to that the new internal welfare mandates. What kind of mandates? Well, it's mandatory annual health exams for all employees over the age of 40, completely free of cost to the employee. Formal safety committees if you have more than 500 workers. And the creation of internal workplace well-being bodies, IWWBs, specifically to address mental health and workplace bullying. It is just a much, much more regulated environment overall. It feels like the government is aggressively stepping right inside the modern office building. It's a huge cultural shift. Which perfectly leads us to our final segment today, segment 7, strategic compliance. Or rather, what the sources called the do not list. The do not list is heavily headed by Section 124 of the Social Security Code. The anti-evasion shield. Exactly. We spent this whole time talking about how employment costs are going up, higher PF, higher gratuity provisions, new welfare costs. Right. The totally natural instinct for a CFO or a business owner is, okay, let's just cut the basic pay to keep the total cost to company totally neutral. Yeah, let's just restructure the salary to absorb the hit. Let's lower the gross pay so the new percentages equal the old cash outflow. Section 124 explicitly prohibits reducing wages or total benefits solely to evade liability under the code. So if you just brazenly cut pay on April 1st to match the new PF cost, You are painting a massive target on your back for litigation. Yeah. It is classified as illegal wage reduction. The labor commissioner can and will haul you up for it. But how do you even defend against that? Companies restructure compensation packages all the time. You need a rock-solid documented business justification, Like what? a verifiable market correction, a documented role change, a broader strategic restructuring of an entire business unit. It cannot just be a mathematical offset of the tax liability on a spreadsheet. Right. You need a clear paper trail that says, we did this because of market conditions, not because we were trying to dodge the code. So compliance is clearly no longer just a junior HR person filling out online forms. No, not at all. The sources call it a joint mandate. It requires a dedicated cross-functional task force. HR has to handle the massive culture shock and the difficult employee communication regarding take-home pay. Finance has to handle the granular cash flow modeling and take that ugly end AS-19 hit. Legal rewrites the contracts. Exactly. Legal handles the vendor risk, and payroll has to completely redesign their systems to meet that insane 48-hour settlement deadline. It is an all-hands-on-deck situation for corporate India. You simply can't work in departmental silos anymore. It truly is. The walls between HR, legal, and finance have to come down entirely to survive this transition. Well, let's start wrapping this up. Yeah. We've covered a massive amount of ground today. If we had to boil this entire deep dive down to the big 3 takeaways for our listeners, what are they? First, the 50% wage rule. It forces an absolute restructuring of the salary construct and expands the base for all statutory liabilities. It is the new gravitational constant of Indian payroll. Got it. Second, the Ind AS 19 P&L hit. It is an immediate, unamortized past service cost that will heavily depress earnings this financial year. CFOs really need to start warning their investors and boards right now. And the third? Third is the checkmate tax risk. The operational margin for error is now 0. If you miss a deposit deadline by a single day, you permanently lose the tax deduction and get taxed on the employee's money. April 1st, 2026. A hard deadline for a very hard reset. A complete macroeconomic rewiring. And as we sign off, here's a final thought to leave you with to mull over on your own.
We are seeing a massive systemic shift where the state is forcing higher savings. Through the PF and gratuity mandates. Right, essentially locking up a huge amount of money for the future. But this comes at the direct cost of liquid cash in the hands of young employees today. It's a forced shift to a savings-based economy. Exactly. So in a country that is currently so heavily driven by immediate consumption, by the gig mindset of instant gratification and liquid cash. What happens next? Right. What happens when you legally shrink the disposable income of the youth today in order to secure their retirement 30 years from now? Are we fundamentally rewriting the social contract of the Indian workforce? Are we forcing a return to the save for a rainy day mentality by law? That is the trillion rupee question, and we probably won't know the real answer until the macroeconomic consumption data starts trickling in later this year. It's definitely going to be fascinating to watch. Something to mull over this weekend. Thank you for joining us, and we will see you in the next deep dive.